like to thank the management, Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Nasik, and the organizers, Arts, Science and Commerce College, Manmad, for giving me the opportunity to share my knowledge with all of you. Since I want to give a lot in a less time, let me go to the topic without wasting a time. Let's first we study this e-content. E-content basically is known as electronic content. This electronic content contains many formats. Among these, images. This e-content is known as electronic content. इसमें टेक्स्ट होती है, images, animation, audio and video formats are included in e-content. Generally, these contents are available online and offline also, and you can transfer this content from one computer to another computer or computer to smartphone or by using internet. Generally, this e-content can be viewed on the screen, and whenever you publish this e-content, then that process of publishing is known as e-publishing. These are the products: textbooks, research reports, thesis, dictionaries, encyclopedia, novels, magazines, comics and newspapers and brochures. These are the products of e-content. I want to share the information that are related with technologies. First, if you want to create this e-content, then technology, generally computer, digital camera, scanners and smartphones are used for the creation of e-content. Then next one is, if you want to process this e-content, then you need a calculator, smartphone or computer. If you want to store this e-content, then you have to use compact disc, then digital versatile disk, pen drive, microchip and cloud. Then next, if you want to display the e-content, then you need the computer, television, projector and smartphone. And if you want to transmit this e-content, you have to use internet, teleconference, video conferencing, mobile technology and radio. If you want to exchange this e-content, you have to use email, cell phone or computer. Then what is e-content development? E-content, the main motto of e-content development is to create information-rich society. Then next, everyone in the society is empowered to create, receive, share and utilize information for their progress. इसमें अगर हम किसी टीचर को लेते हैं तो टीचर ई कंटेंट को प्रोड्यूस करता है. टीचर जब ई कंटेंट को प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूस करने के बाद स्टूडेंट्स उसको रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद वो the students can share this content also and utilize this information for their progress. Then next one, the main aim of this e-content is to develop well-designed and validated e-content. Generally, this e-content is available in these forms. First form is text form. Generally, PowerPoint presentation, Word file or Google Documents file. These files are in the text form. You can edit this text by using different methods. According to the guidelines provided by UGC on Swayam platform, every textual document must contain 3000 words on the topic of each module. Then next, जो भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें मल्टीमीडिया सप्लीमेंट्स होने जरूरी है, जिसमें इमेजेस आप ऐड कर सकते हो एंड ड्राइंग्स ऐड कर सकते हो, मैप्स, ग्राफ्स, जहां जहां पे ये नेसेसरी होंगे तो वहां पे आपको ये टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स में ये कंटेंट ऐड करने जरूरी है. इसमें द कंटेंट शुड नॉट बी प्लैगियराइज. ये कंटेंट प्लैगियराइज नहीं होना चाहिए और सिमिलरिटी ई टेक्स्ट की जो होनी है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी है, यानी 15% तक ही यहाँ पे प्लैगियरिज्म जो सिमिलरिटी है वो अलाउड है. 15 से एक्स्ट्रा अगर हो जाती है तो यहाँ पे ये वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए वो ई कंटेंट एलिजिबल नहीं है.
Then next, UGC provide this software, Urkund software, to check the plagiarism. Then this text can be converted to PDF. This text also converted to images. The next text also with special effects converted to animation. This text also converted to audio, and this text also converted to videos. यहाँ टेक्स्ट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में. बेसिकली देयर आर टू मेथड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू पीडीएफ. फर्स्ट मेथड, इफ यू गो टू द फाइल, वर्ड फाइल, दिस इज द वर्ड फाइल. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे आपको ऑफिस बटन मिलेगा. यहाँ पे अगर ये फाइल को आप सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है. अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो. वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जो भी इंटरफेस आपके सामने ओपन होगी, तो वहां पे या बॉटम पे सेव एज अ टाइप, यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ सेव कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं. यहाँ पे हम पीडीएफ ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे. सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. जनरली पीपल आर वेल नोन अबाउट दिस मेथड. द नेक्स्ट मेथड, इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी टेक्स्ट इनटू द पीडीएफ फॉर्मेट without using any software, then Google Docs is the best method. Then Google Docs is used to convert this text file into PDF file. First you have to open the text file. After opening this text file, there is an option on the left hand side, file option. If you click on this file option, then here download is option is present. When you click on the download, you get number of options. In these options, you will get this PDF document, save as PDF or download as a PDF. When you click on this PDF document, this text file is converted into the PDF format. Again, it will ask you the location where this file you have to store. I store it on a desktop, then save it. In this way, you can convert this text document into PDF format. Then next is PDF format. Whenever you have to convert this PDF file into text, you can also convert this PDF file into images. You can convert it into a video also, audio also. These all are interconvertible into each other. First, we learn what is PDF. This PDF is a portable document format. In order to convert this PDF into text file, you have to use the Google Drive. Instead of using software, Google Drive is the best platform where you can convert all these e-contents into different formats. Here I want to convert this PDF file into text file. First open this file. If I want to convert this first file into text file, then first you have to select that file, then open with. You will get these options. Among these options, you have to click on the Google Documents. If you click on the Google Documents, this Google document complete this PDF file into a text file. This file is editable text. तो इस तरीके से आप PDF फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप अगर इसको एडिट करना चाहोगे तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो. डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक साथ एक ही फाइल पे 2 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये
completely converted to text file. यहाँ पे आपको एक जरूरत होती है सेटिंग करने की, तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी डेटा है आप उसको रख सकते हो, और उसके बाद जो अननेसेसरी डेटा है यहाँ से आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो. दिस इज द वन मेथड you have to convert this PDF file into a text file. If you want to translate the same file, basically if I want to convert this guidelines for e-development, e-text, I convert it into a, once again, Google form, a Google document. If I want to translate this complete text file into any regional language, you can also translate this file into a regional language. If I have to convert this into a regional language, I have to go to this option, Tools. Then when you click on the tools, you will get such type of options. Among these, click on the translate document. Here you have to select the language. I select here Hindi as a regional language. All Indian languages are available on this Google document. Then click on translate. Then here the complete PDF, we converted this PDF file to text file, and text file is converted into the regional languages. You can convert the reports of our colleges into these different languages or regional languages, or you can also convert the regional language report into the English or any other languages. In this way, this conversion can be done with the use of Google Drive. Then next format is images. Images are of basically three types: JPEG image, GIF image, and PNG image. First, JPEG is also known as Joint Photographic Expert Group. These are the digital images, and PNG are portable graphic format. It has the ability to display transparent backgrounds. In order to create images, if I want to create image of this presentation, then on the screen, on the keyboard, you will have this button PRTSC, this print screen, this button. If you press this button after, if I want to create the image of this presentation, I press the print screen button of the keyboard. After pressing this button, you have to go to the Paint software, which is by default in your computer. Then click on the paste button. If you click on the paste button, the complete screenshot of the laptop or computer screen is in front of you. If you want to select only the diagram from this computer screen, I select this complete diagram and then click on this crop button. After clicking on this crop button, you have to select this file option, then save as. You will get different options. You can save this image as PNG picture, JPEG picture, BMP picture, or GIF picture. This is the method to convert any screenshot or any screen of your computer or your PDF file or your text can be converted into image format. I save it as a PNG picture. I save it on a desktop as a PNG. Then click on the save button.
If I will go to the desktop, here you will get the image of that content. In this way you can convert any material from the PDF, from the text or any screen of your computer or laptop into a JPEG image or PNG image. Then second is, if you want to create image, then in your PC there is a snipping tool. If you search in your search box snipping tool, that snipping tool is a scissor by which you can crop any image from your desktop or from your file also. This is the snipping tool which is used to create images. If I want to take the screenshot of this icon, then I click on the snipping, this option new. If I click on a new, if I want to create the image of these icons, I select these icons. After selecting these icons are converted into an image format. You can convert this format into different types. If you click on the Save As button, you also get the similar options: PNG, GIF, JPEG or HTML format. I save this file as a JPEG format, then click on the Save button. In this way you can convert these images. In this way you can create such type of images from your computer, from your laptop by using these tools without installing any software. If you want to convert this image, if any image have the text, and if you want to convert the text from this image into the text format, then Google Drive is the best option to convert such type of files. Here there are two images. I want to convert this text from these images into a text format. This is in a Hindi language. I want to convert it into editable text. If I want to create this into text file, then select the first, you have to select this file, then right click, then open with Google Docs. First, you will get this image. You can delete it from this file, and in this way you can convert any text from the images into a text file, and this is editable text. You can also convert this second file also. First select file, then open with Google Docs. This is the first image of this image file. Then below this image, this is the text. This type of text is extracted from that image. You can also edit this text. This is the editable file. Then animation. If you apply some effects to the text, PDF or images, then it can be converted into animation. Animation generally is divided into two parts:
2D animations and 3D animations also. I want to show the example of animation. Photosynthesis is the process that captures energy from sunlight to make sugars that store chemical energy. Photosynthesis uses sunlight, water, and carbon dioxide to make 6-carbon simple sugars. Oxygen is released as a waste product. In many photosynthetic organisms, In this way, these are the animations, and if you have to create the animation, you can use the Blender software to convert this all images into an animation format. Then next one is audio. ऑडियो फॉर्मेट, बेसिकली ऑडियो बहुत जरूरी होता है. अगर आप वीडियो प्रिपेयर करते हैं तो वीडियो प्रिपेयर करते वक्त सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होते हैं, मैं यहाँ पे 65% वेटेज ऑडियो को देना चाहूंगा. अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आपके वीडियो अच्छे हो सकते हैं. वीडियोस में आपको हर एक जगह पे 4 सेकंड से ज्यादा जो भी इमेज है वो वहां पे स्टेबल करनी है. आफ्टर 4 सेकंड्स इमेज शुड चेंज इनटू द अनदर इमेज, यानी सीन यहाँ पे चेंज होना जरूरी है आप अगर किसी वीडियो को क्रिएट करते हैं. आई विल सजेस्ट Audacity is the best software to convert or to create your voice. You can enhance your voice by applying special effects. This is the interface of Audacity. It is the freeware software. You can download it from Google also. If I have to record the voice, I click on this red button. नमस्ते, मैं सतीश आयरे आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम जानने वाले हैं ई कंटेंट के बारे में. Then if you want to stop this recording, click on this red button. Then यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो लाइंस यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज नॉइज. बैकग्राउंड में जो भी वेव्स, जनरली अपना जो साउंड होता है वो साउंड वेव फॉर्म में क्रिएट होता है, और ये साउंड को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं जिसे नॉइज बोला जाता है. नॉइज बेसिकली आपके आवाज के अलावा जो भी अदर फैन, कंप्यूटर का फैन हो सकता है, आपका अदर जो बैकग्राउंड नॉइज होगा वो क्रिएट रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर. तो पहले हम आवाज को प्ले करके देखते हैं. देन इफ यू वांट टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, देन इफ यू वांट टू स्टॉप दिस, देन इफ यू वांट टू स्टॉप दिस, नमस्ते. Basically, this first namaste sound is known as noise. I want to create this noise. First, I have to select this portion of this line, then go to the effect option. After going to this effect option, you will get noise reduction. I click on this noise reduction. Then you have to send the noise profile first. I select on this option, get noise profile. After clicking, you have to select all content, then click on effect, then next click on noise reduction, and here at the bottom you have the option OK. You click on this OK button. The whole effect is applied to this waveform. Then you can play this button. नमस्ते, मैं सतीश आयरे आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम जानने वाले हैं ई कंटेंट के बारे में. इफ यू वांट टू ऐड द इको, कंटेंट के if you want to echo to the same file, then click on this. Then go to the effect option once again, then click on echo option.
you will get such type of interface. Then click on OK. I play again this audio. नमस्ते, मैं सतीश आयरे आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, जहां पे हम जानने वाले हैं ई कंटेंट के बारे में। देन इफ यू वांट टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, in this way you can give different types of effects to this your voice. तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी। आप अगर अपनी वॉइस को क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, तो देन आप इमेजेस को अप्लाई करके ये सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप बोलेंगे और आपके बोलने के बाद जो भी सीन होगा वो सीन आपकी स्क्रीन पे मूव होगा। देन नेक्स्ट वीडियोस। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय यूजीसी ने जहां पे वीडियो मेकिंग के बारे में, ई कंटेंट के बारे में कहा है, जहां पे स्वयं पोर्टल पे जो भी आप वीडियो देखते हो तो उसके बारे में ये गाइडलाइंस है। इसमें बोला है कि जो भी आपका विजुअल डिस्क्रिप्शंस होंगे या टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस होंगे वो वीडियो में जरूरी है। इसके साथ आप किसी एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री ऐड कर सकते हैं वो वीडियो कंटेंट में। बेसिकली जब भी हम कैमरा फेस करते हैं तो कैमरा फेस करते वक्त बहुत बार हम अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि बहुत बार ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये आप डायरेक्टली इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। बार बार रिटेक करने के बाद आप कैमरे के सामने जाके आपका कंटेंट जो है वो कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड गाइडलाइन दी है वो है लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा लेंसेस। जब भी हम बात करते हैं तो बात करते वक्त कैमरा लेंसेस की हैबिचुअल कैमरा लेंसेस से हमें हैबिचुअल होने की जरूरत है। देन ऑडियो को कैसे क्लियर करते हैं ये तो हमने देखा, जहां पे हम बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। देन वीडियो जो होता है, वीडियो में मल्टीमीडिया होता है, एनिमेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री और वर्चुअल लैब्स का यूज किया जाता है। I want to suggest some video making and editing softwares. In the first, a PowerSoft screen recorder is the best screen recorder by which you can record your screen and give the voice to your recording. This is the best software. Then second is Open Broadcasting Software, OBS, which is also known as OBS. It is used for video making and live streaming purpose. My friend Dr. Shenge is going to explain this OBS. The next is AZ Screen Recorder. This is the mobile screen recording app. You can record the screen of mobile by using this app. Then next is X Recorder, mobile screen recorder. It is also used to record the screen, and you can also give the audio and video to this screen. I think our friend Adore sir is going to explain this mobile app. Then next is video editing software. If you prepare any video, you need to edit that video. But most of the times we repeat many actions while recording the video. That actions can be deleted by using this software. First is Shortcut. It is the freeware software which is used to video editing. Then next one is OpenShot software. It is also used to video editing. And next one is Ice Cream Video Editor. It only provides the editing of video up to the length 10 minutes. You can only edit the video which have the length 10 minutes. Therefore, this is also the video editing software. And last, I want to share the one most important extension of this Google Chrome. Extensions are generally provide extra features to Google Chrome. If I write here the Wikipedia website, if I want to convert this Wikipedia website in a regional language, if I want to convert this language into a regional language, if I select this first, I don't know which type of language is this one. I click on this.
I want to read the content of this website. If I want to read this content, then you have to install the one extension which is known as Google Translate. This Google Translate converts this complete page into your regional language. After clicking on Translate page, you will get such type of strip where you can select language. Many different languages are available in Google Translate. I click here on Hindi. The complete text is converted into Hindi. तो इस तरीके से आप किसी भी भाषा में अगर कोई वेबसाइट होती है तो वेबसाइट को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं. If I want to convert it into Punjabi, it also converted into a Punjabi language. So in this way, you can convert a web page into a language of any web page into your regional language. And second is Google Input Tool for Google. It is also the extension of Google. You can write in any language by using this Google Input Tool. This software can be installed into your computer and laptop also, where you can write in any languages by using this software or extension. I hope you have understood the various points that I have discussed under this topic. Thank you. Over to you, sir. Milind sir. Thank you very much. Thanks for joining us and accepting our invitation and for this excellent presentation on e-content development. If Sir allows me, I can hand over this next session to Professor Vishnu Adore sir. Before that, मिलिंद सर एक क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके. पण खरं तर सतीश आयर सर सलग 2 तास आपण ज्युनियर आणि इंग्लिश मिडियम स्कूलला आपण ट्रेनिंग दिलेले, तरी आज आपण थोडं सगळ्या सॉफ्टवेअर बद्दल माहिती घेण्यासाठी थोडं डिवाइड केलेलं आहे. कारण सिनियरच्या कॉलेजच्या स्टाफला बऱ्यापैकी बेसिक नॉलेज असतं, त्यामुळे त्यांनी रिस्ट्रिक्ट करून आणि फार मला असं वाटतं की 25% त्यांनी तो पार्ट घेतलेला आहे. कदाचित पुढचा वेळ मिळाल्यानंतर आपण घेऊया. सर, हाऊ टू कन्वर्ट PDF फाईल विच कंटेन फोटोग्राफ्स टू वर्ड फाईल, हा क्वेश्चन रोहित शिंदेंनी विचारलेला आहे. हाऊ टू कन्वर्ट PDF फाईल टू वर्ड फाईल विच कंटेन फोटोग्राफ्स. Basically, you can convert this PDF file by using Google Docs, sir. I hope that will convert it into the text file. पुढचा क्वेश्चन आहे, कॅन वी यूज स्किन मास्टर सॉफ्टवेअर इन व्हिडिओ एडिटिंग प्रोसेस. कौन सा सॉफ्टवेयर सर? स्किन मास्टर. It is mobile app, sir. It is mobile app. It can be used to edit the videos in the mobile. You can only use in mobile. How to change text into image? Text into image by using snipping tool or by using the screenshot of this computer. You can convert it into the image format, or by using a Google Slide. Google Slide can be also converted into the JPG image, GIF images by using the Creator Studio add-on. You can install it on Google Slides and you can convert this complete slide into GIF, PNG or video file also. अतुल काळेंनी विचारलंय, हाऊ टू रिमूव्ह बॅकग्राऊंड नॉइज अँड सिस्टीम व्हॉल्यूम ऑफ. आता ऑलरेडी तेच एक्सप्लेन केलंय. Shortcut is the best. In Shortcut video editing software, you can also edit the audio. कल्याण कोकणे सर विचारताय, सर शॉल ऑडियोसिटी ऑल्सो बी यूज टू एडिट द ऑडिशन ऑफ ए व्हिडिओ. Sorry sir. Audio of video. शॉल ऑडियोसिटी, आता ते कदाचित ऑडियोसिटी एक सॉफ्टवेअर असू शकते, ऑल्सो यूज टू एडिट द ऑडिशन ऑफ ए व्हिडिओ.
audio of the video. Audio of the video. You can use, sir. You can use Audacity. There are some procedures to convert that. First you have to extract the MP3 or MP3 file, and then you have to process it, and again you have to apply it to your video. There is a lengthy procedure, but most of the softwares provide the voice editing also. One more question, sir. Is it possible to equation in PDF to text format? काय sir? Sir, is it possible to equation in PDF to text format? Equation in PDF to text format. नाही sir, इथे most of the times we have difficulty to convert these equations. भंडारी सरांचा क्वेश्चन आहे, इंटरॅक्शन विथ स्टुडंट पॉसिबल इन ई लर्निंग. होतेच आहे ना ते, आता ते आपण तेच करतोय आय थिंक. राईट. चला, आय थिंक प्रायमरी बेसिक कन्सेप्ट सतीश आयर सरांनी घेतले आहेत, आणि त्यांना जर कोणाला ट्रेनिंग चांगलं करून घ्यायची असेल, इव्हन गुगल क्लासरूम असेल, झूमचं ऍप्लिकेशन असेल, गुगल मीटचं ऍप्लिकेशन्स असतील, सेटिंग्स असतील, नियर अबाउट 76 व्हिडिओज त्यांनी मराठी भाषेमध्ये बनवलेले आहेत. आणि त्यांचं एक चॅनल आहे युट्यूब चॅनल. मला असं वाटतं की ते युट्यूब चॅनलचं नाव सांगितलं तर ते सगळ्या पार्टिसिपंट कॅन अवेअर विथ. एक सेकंड सर, स्क्रीन शेअर करतो. या हे सर्व डिटेल्स आहेत. युट्यूबवर जर तुम्ही गेलात तर सतीश आयरे म्हणून सर्च केलं तरी तुम्हाला हे सर्व डिटेल्स मिळणार आहेत, तिथे बघू शकतात तुम्ही. सगळ्यात महत्वाचं आहे, रिजनल लँग्वेज मध्ये कंटेंट त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्यामुळे जे काही कोणाला त्याच्यात काम करायचं असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे.